Asha is deep rooted inside my heart and my career also. Oh wow. It definitely has played some role in subconscious shaping. uh, I डोंट नो अगर जेन जीज ये समझते हैं, बट तब इकबाल फिल्म की बहुत क्रेजी वेल डिजर्व्ड हाइप थी, और इस गाने की बहुत ज़्यादा हाइप थी. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक इट डिफाइंड द एस्पिरेशंस ऑफ अ जनरेशन. उस गाने के बारे में जानना चाहूँगा. यार ये तो गाना ऐसा था कि इट वाज पिक्चर बन चुकी थी एंड नागेश ऑब्वियसली ही ऑलवेज इज़ वेरी वेरी ऑन विथ हिज ब्रीफ. उसको एग्जैक्टली पता है क्या चाहिए. हमारे लिए हमने नागेश के साथ में एक पिक्चर की थी जिस कॉल तीन दीवारें, which is very nice. It was only background score, three amazing actors, Nagesh himself, Nasir Sahab, and Jackie Shroff. It's a prison film. This film was very different because it's obviously about a handicapped child, kid. I mean, who can't speak, and he's going to be a cricketer. उसने मुझे सिर्फ एक ही ब्रीफ दी कि सलीम आई वांट अ सॉन्ग विच इज़ वेरी होपफुल. पता नहीं मुझे क्या हुआ उस दिन दैट आई द मिनट आई हर्ड दिस वर्ड होपफुल आई जस्ट ट्रांसलेटेड इट टू आशाएं. मेरे दिमाग में वो वर्ड आ चुका था एंड लिटरली आई सैट डाउन ऑन द कीबोर्ड एंड आई स्टार्टेड आशाएं. ये आ चुका था मेरे पास. ना 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 ना. He wanted a rhythm and a melody because obviously वो practice कर रहा है बोलने के लिए. So things started moving from there. Double arm goosebumps. And then I don't know why it was just the da 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 di da la. Oh, I would just da shy kile na na na. I just had this word, and my friend Irfan Siddiqui, who's also written Ali Maula, he did the lyrics for this, and he just wrote Ashaye khile dil ki. उम्मीदें. I has loved उम्मीदें. उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. So the chorus was intact, and I said, he asked me who you want, and I had sung the song. मैंने गाना गा लिया था. So I said, Nagesh, I want KK to sing this song. He said, but you're sounding good, yaar. But no, like, get KK, yaar. KK is an amazing singer. I said, yeah. He's got a big voice and बड़ी खुली आवाज़ है उसकी. So KK came and he said, एक कंडीशन है सलीम, मैं गाऊंगा, आशाएं सिर्फ तेरा रखेंगे. आई वॉन्ट. हमने कभी गाना साथ में गाया नहीं है. ऐसा मैं तो वैसे ही नहीं गाता हूँ यार. इसे नहीं, मेरे लिए एक चीज़ कर ले. आशाएं जो है ना, ये पार्ट. सो कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास. आशाएं, दैट्स मी. दैट आशाएं. एंड आई वाज लाइक ओके कूल, ठीक है, आई विल सिंग इट विथ यू. And I sang together, and I'm so glad that we did it because when he passed away very very suddenly, yeah, just totally not expected. One of the deep pains of an entire generation, I'd say. हाल ही में there's so many musicians and singers who've left at that age of 52, which is very young age, I think. Zubeen Garg just expired recently, very suddenly. Again, another legend. So yeah, it was sad, but I feel like his voice lives on, yaar. His voice lives on, and today I used to not sing this song in my concerts. पहले नहीं गाता था मैं, because हमारे दूसरे कुछ गाने थे वो ज़्यादा मशहूर थे. More than Asha? Yeah, I mean, like, I mean, Asha is also a very popular song, but I would somehow not keep it in my set list. But now I started doing it every time, and हर बार मैं गाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्त को जी रहा हूँ. I'm living it. You feel him around when you're channeling? Yeah, I miss him, man. I feel him. I mean, I don't. मैं इस चीज़ का बयान नहीं करता हूँ इतना लोगों तक, but जब भी मैं गाना गाता हूँ, I dedicate it to him, and I feel happy. I don't feel sad. I feel happy. I feel happy that we've that he told me to sing that song, that one line. इस वजह से हमारी यादें जुड़ गई है एक साथ. So that's a good thing. Can we speak about him a bit? Of course, man. Yeah.
what have people not understood yet about KK? KK was one thing. I feel that he had so much to give, so much to talk about. मुझे कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि he didn't appear in so many didn't appear on TV, didn't do so many interviews, you know. पर उसका दिल इतना इतना मुलायम और इतना बेहतर, सच अ ब्यूटिफुल हार्ट ना, इतना प्यार है उसके दिल में यार, लोगों के लिए इज्जत, हर उसकी बैंड, उसका जो बैंड था, दिस बैंड इज हिज एक्सटेंडेड फैमिली, इतने शोज करता था वो. तो एक तो ही वाज एंड ही यूज्ड टू लव कुकिंग मैन. One day I remember there was a recording and all that, and he said like, यार मैं संडे नहीं कर सकता हूँ यार, नहीं आ पाऊँगा संडे I cook. So he's like, he's chalked that day out, you know. It was an important song जिसकी recording होनी थी. नहीं यार, it was a jingle that we were working on. He said, yeah, Sunday I can't work out. I said, क्या हुआ? You're going out of town or something? He's saying, yeah, it's a family day, bro. I'm cooking. So he used to love cooking himself in the kitchen. Yeah. So yeah. And then of course he was a very private person. Yeah, सब हर चीज़ ना वो अपने, he was just very into his family and himself. कहीं बाहर ज़्यादा जाता नहीं था, लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं था, इंटरव्यूज नहीं करता था. जिन गानों की वजह से He didn't need it, but it's just that also he didn't feel like it. Like he was just happy and content. खुश था यार. That's where the magic came from. Yeah. That's where his soul would come out from, I think. His voice. Beautiful voice, yeah. जिन गानों की वजह से मिलेनियल्स उन्हें याद करते हैं. Okay? There's यारों दोस्ती. Yeah. There's प्यार के पल and आशा. Yeah. At least these are the three songs at the top amongst a host of बहुत others. सारे गाने यार. हाँ. But these are the three songs which were generation defining. एक शो हुआ करता था 90s में, जस्ट मोहब्बत. Remember this? I don't know about this. उसकी भी थीम आई थिंक उन्होंने ही गाई थी. अच्छा, okay. And very very iconic 90s show on Sony TV. But Okay. I think a lot of millennials associate KK with nostalgia and character building. कि उनके सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर बिल्डिंग दिया लोगों को. And दोस्ती का बड़ा एक उसमें वो था. Yeah. Because यारो दोस्ती, फिर also that McDowell's ये नंबर 1 यारी है, I think वो भी इसने ही गाया था मेरे ख्याल से, केके नहीं गाया था. तो उसका यारी का और ये यारो दोस्ती बड़ी, काफी सारे गाने ऐसे हैं. He was, I think he was, you're right about millennials. There was a very iconic youth recall with KK's voice. You know. Every millennial is now 30. Yeah, that's true. That's Still young. Yeah. You tell me, how's 30? How's 30 from your viewpoint now? I feel like I am 30, even though I'm not. What was 30 for you? It was bhagdod. Too much. Yeah. 30s? Yeah. 30s was... I was hustling. I was doing movies, yaar. Movies was I was enjoying myself. I'm talking about, in the year 2004, I was doing Iqbal, Ashaएं. And 2005, we got offered Chak De. We were doing movies after movies after movies. So, hustling but not struggling. Hustling in a good way. Like, working hard. Enjoying the grind. Yeah. Rhythm. Yeah. Grind and rhythm. Absolutely. यार भूत जैसी फिल्म 2000 में कर ली हमने. It was an eye opener for us, मैंने जब पिक्चर देखी थी तभी मैं बोला यार ये फिल्म हम लोग कर पाएंगे कि नहीं. मैं खुद बहुत डरता हूँ. I don't like this horror genre. मुझे नहीं पसंद है. और पहली बार जब मंजीत को मैं देखा, जो मैंने रफ फिल्म देखी थी, मैं बोला यार ये फिल्म क्या है. Was it creepy composing the music for Bhoot? Yeah, it was. Because you have to channelize something dark. Yeah, it was. And what was more creepy is to not do music. See, everybody knows where to do music. भूत की खासियत ये है कि उसमें म्यूजिक जो है ना वो बहुत कम है. People don't realize that. And that's a good thing that I learned. That background score तो सब कर लेते हैं. But जो background score जो
जिसको एक्सपीरियंस होता है ना, वो जानता है कि कहाँ नहीं करना. दैट्स गुड टैलेंट. हमने बैकग्राउंड स्कोर बहुत भर के कर दिया था भूत में. लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है. आपने देखी फिल्म वो? लॉन्ग अगो. ओके, गुड. तो इतना म्यूजिक किया था हमने. एट वन पॉइंट मैंने एक फिल्म देखी, रिंग. ओ गॉड. ओके, आई सेंड दैट मूवी. तभी वो LDs हुआ करती थी, लेजर डिस्क. सो आई सेंड दैट मूवी टू राम गोपाल वर्मा एंड आई सेड, सर वॉच इट. ही कॉल्ड मी, ही सेड लेट्स मीट टुनाइट. सो वी मेट. जितना भी म्यूजिक हमने किया था ना भूत में, 60% हमने बंद कर दिया. एंड रणवीर, द साइलेंस दैट वी क्रिएटेड, it's the silence that created the horror. That's why when Urmila gets up, goes down to get the water, goes to the kitchen, पानी लेती है, भरती है, आती है, सब quiet है, atmospheric music चल रहा है. The minute she goes up and she turns, that's where you see Manjeet, and you're like, that's where the music happens, you know, a big bang, and you feel that thud in your heart because there's silence before. ओवर टाइम मैंने ये जाना है कि all forms of media work are actually a form of illusion creation. बिल्कुल, well said. Right? Absolutely. मतलब I don't know if you're familiar with Spider-Man's universe, but Of course, man. Spider-Man में एक विलन है मिस्टीरियो, जो बेसिकली illusions क्रिएट करके स्पाइडरमैन के साथ फाइट करते हैं. All media professionals are Mysterio. Wow, well said. That's what we're paid for. Yeah. To just create जो जिसे एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में राहु कहते हैं. Correct. Similar energy. Got it. If you have strong Rahu, you're probably a good artist. Probably. Or you're really messed up as a person. I never looked at it like that. Well said. जब आपसे बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्वर्सेशन. ऑटोमेटिक जब हम हॉरर के बारे में बात करें, थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसी कॉन्वर्सेशन. बहुत ज़्यादा लो. राइट? Yeah.